Rahim, so this is the first video on search strategies जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस की थी. I'll just talk about the basic algorithm that has to be implemented in case of tree search. तो अभी ट्री सर्च के हवाले से हम बात करेंगे. तो I think the first step that you need to discuss in this particular case is, which we call as step number 1, that is the problem understanding. Okay, so you need to understand the problem what you're trying to solve first. That is, or if it is a navigation problem or a mapping problem, then you will have to see that what type of map is given to you और किस तरह से उसको जो है वो आपने जो है वो रिप्रेजेंट करना है इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन. तो अगर मैप है तो उसको ग्राफ या ट्री में आप कन्वर्ट करेंगे. But in order to do that, first of all, you'll just have to see that what the problem itself is. Step number 2 is primarily develop what you can say a search strategy, or वो search strategy है that would give rise to various types of search methods. तो search strategy is the second thing. और first search strategy के बारे में we'll be having some follow-up videos on that. Then basically you also need to then devise an algorithm to actually solution to the problem, and that has to be done through devising an algorithm in algorithmic form. और वो algorithm के जितने भी concepts हैं, we'll try to understand that what are those steps that are required in algorithms. Okay, so in case of understanding a problem, if you are given a map, for example, if there is some building here, some building here, some buildings here, and few things here, and then there is a road network that is connecting various parts of the city together, then you'll just have to, let's say, connect these or represent these different nodes that are or junctions that are present on this particular road network in the form of nodes in a graph. So you can have, let's say, node 1, that could be the junction number 1, and then you can have node 2 and junction 2, and they are actually connected. Similarly, this is connected to 3, the 1 could also be connected to 3. So this is a sort of a representation. If it is bidirectional, then it becomes a graph. Otherwise, this could become primarily a tree representational if it is like one-sided, as we have gone in this particular case. But you have to avoid cycles if it is a tree representation. Okay, then the strategy primarily would be that if you are given some start point, to start point say, and if you are given some goal point where you need to end up, then how would you basically move from start position to the end position? That is what strategy would primarily be meaning. And there are different ways of doing it. We'll be exploring those methods in this discussion. Okay. So what we'll be doing is that we can introduce few terms. Those the node at which you are already traversed. So there would be three primarily or two sets of nodes that you might have in case of this type of a representation that we have got here. You might be present at node number 1, so that is where you're already present, and these two nodes are still to be explored. When we say it needs to be explored, it means that you need to simply find out whether 2 or 3 are your goal nodes or not. So you need to actually expand one and then evaluate the expanded nodes from one. So that's what the strategy would mean, that how to expand. And then there will be a list of unexplored nodes, or unexplored nodes will be there, which would mean that these are those nodes which you haven't really explored yet, or they haven't been expanded yet. Okay. So fringe nodes are primarily those nodes which are on your list, which you have already expanded, or that may represent the frontier of those nodes that
have been expanded so far. So what does that mean is that, okay, you can use this word fringe, or you can use any other word, for example, already explored nodes or something like that. So if you start from here, and let's say you move in this particular direction, and you have explored this node, you have explored this one, and that means that these nodes, which are these three nodes, these need to be expanded, so they will fall under the category of unexpanded nodes. And your fringe, or your frontier of your search is primarily, which is represented by this vertical line which is shown here. So this is your frontier or your fringe. You can call it frontier or fringe, or the partition at which this separates out your explored nodes versus unexplored nodes. So when I say explored node, it actually means, or expanded node, it actually means that you have actually you have actually evaluated that node, whether that's your goal node or not. And if the answer has come out to be no, you have actually further divided it, or further explored it, or further expanded that particular node. तो आपने इसको भी देख लिया है, ये आपका गोल नोड नहीं है, आपने इसको भी देख लिया, ये भी गोल नोड नहीं है, आपने इसको भी देख लिया, ये भी गोल नोड नहीं है, और अब आपने फर्दर इनमें से किसी नोड को एक्सपैंड करना है, और फिर ये एवेल्यूएशन प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा. सो व्हाट इज़ दैट एवेल्यूएशन प्रोसेस? लेट्स जस्ट try to put together an algorithm. So what would your algorithm or your solution strategy? So here we have our solution strategy. Okay, our solution strategy would primarily be that how do once we have represented a problem in some form, for example map को आपने graph या tree की form में represent कर दिया, या किसी और प्रॉब्लम को आपने उसकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर्स, देन यू एक्चुअली हैव टू अप्लाई अ सर्च स्ट्रैटेजी ऑन दोज. और उसी स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल एक्चुअली बी डूइंग इज़ that you'll obviously your first step is that you will start from some node. So you will have a start node, यहाँ से आप उसको start करेंगे. Let's say that start node is represented by S. The next step would primarily be, and this would go in a sequence, in a sequence as well as in a loop. So the next step is that you start from your start node, and the first thing that you'll actually do is that you will evaluate your nodes. So that's your evaluation. Evaluate the nodes, and you will implement it in the form of an evaluation function. So evaluation function, what would this evaluation function or evaluate node function would actually do? We can represent it with eval, or E for short, E भी आप उसे कह सकते हैं. तो E of S will find out whether S is your goal node or not. So if S is your goal node, your search would stop, and if S is not your goal node, then your search will continue. So let's suppose that your search, that S is not your goal node, and then what will happen is that you will basically be defining a successor function, okay, or a function that generates or expands further upon S. So let's say कि आपके पास S के बाद जो है वो एक नोड A है, एक नोड B है. These are all the children of S, A, B, C. So you will actually generate a successor function. Let's represent the successor function as a successor function, and S will basically be an argument to this particular function, and the result that you will be getting as a result of this function would be A, B, and C. So these are the children of S, and they will actually be generated. Okay, the strategy of generating these nodes varies from search strategy to search strategy. For example, अगर एक search strategy मैं adopt करता हूँ तो different sequence में ये search nodes generate होंगे, और अगर मैं कोई और search strategy adopt करता हूँ तो different sequence में होंगे. For example, if I say that right node जो है that is given preference, so C is given preference, तो सबसे पहले मैं जब मैं जनरेट करूँगा नोड्स को, या जब मैं सक्सेसर फंक्शन जो है दैट इज़ फॉर जनरेटिंग नोड्स, जब मैं उसको जनरेट करूँगा या एक्सपेंड करूँगा, देन आई विल एक्चुअली बी जनरेटिंग सी फर्स्ट, या एक्सपेंड करूँगा सी को, और फिर if the preference is moving from right to left, तो फिर the sequence of generation will be C, B, and A. And if the left node is preferred, then the sequence of generation could be A, B, and C. If the middle node is confirmed is preferred, and then the left node and then the right node, तो फिर sequence of generation जो होगा वो B, A और
C होगा. So this is what the successor function will actually do. Successor function actually implements your strategy, whatever that strategy is. और इस strategy की base के ऊपर जो है ना वो different search types जो है ना वो हम define करेंगे. ओके, आई जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल कि आप लेफ्ट नोड से राइट नोड की तरफ मूव कर सकते हैं, या राइट नोड से लेफ्ट नोड की तरफ मूव कर सकते हैं, या मिडिल नोड को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर वो ऑड नंबर्स में है आपके पास. तो एनीवे ये वो डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमने डिवाइस करनी है. दिस इज़ हाउ द एल्गोरिथम एंड अल्टीमेटली वंस यू विल एक्चुअली बी जनरेटिंग दीज नोड्स, और फिर यहाँ से प्राइमरीली यू विल एक्चुअली बी मूविंग इन अ लूप एंड यू विल कीप टेक वन नोड एट अ टाइम फ्रॉम हेयर. जैसे अगर मैं राइट नोड को प्रेफर करता हूँ तो सी को मैं उठाऊँगा, एवेल्यूएट करूँगा. अगर वो गोल नोड नहीं है तो फिर मैं बी को उठाऊँगा, एवेल्यूएट करूँगा. फिर वो गोल नोड नहीं है, फिर मैं ए को उठाऊंगा और एवेल्यूएट करूँगा. दिस इज़ हाउ माई सर्च स्ट्रेटजी वुड वर्क इफ द राइट नोड इज़ गिवन प्रेफरेंस. अच्छा, अगर लेफ्ट नोड इज़ गिवन प्रेफरेंस विच इज़ ए, तो फिर मैं ए को पहले उठाऊंगा, एवेल्यूएट करूँगा, फिर बी को उठाऊंगा, फिर सी को उठाऊंगा और उनको एवेल्यूएट करूँगा. दिस विल कंटिन्यू एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू until I reach the my goal. ठीक है, so this would happen in a loop. So this is what this loop, and obviously the terminating condition will be if I reach the goal, I'll stop. And if I am unable to find a goal और complete tree को मैंने explore कर रही है या अपने graph को मैंने explore कर रही है, तो उस सूरत में I'll return saying that okay, I haven't been able to reach my goal node. So this is primarily the solution strategy और the standard algorithm. तो standard algorithm implement करने के लिए जो आपको functions implement करने हैं, उसके अंदर the very first function that you will actually have to implement और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ द एवेल्यूएशन फंक्शन जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है. दूसरा आपको सक्सेसर फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जो कि नए नोड्स को जनरेट करेगा. और ऑब्वियसली तीसरा एक फंक्शन आपने रखना पड़ेगा, या आप अपना डेटा स्ट्रक्चर ऐसे चूज़ कर सकते हैं, या उसमें जब आप नोड्स को ऐड कर रहे होंगे वो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं जो कि पाथ को रिटर्न करेगा. ठीक है, सो दिस कुड बी पार्ट ऑफ योर सक्सेसर फंक्शन कि वो पाथ भी साथ साथ रिटर्न कर रहा होगा, या फिर आप अलग से भी इसको जनरेट कर सकते हैं. लेकिन एनीवे ये फंक्शंस आपको करने पड़ेंगे. पाथ रिटर्न फंक्शन जो है दैट इज़ समथिंग जो कि बैक ट्रैकिंग के थ्रू जो है वो बैक ट्रैकिंग के थ्रू भी आप उसको निकाल सकते हैं. लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू अ सिंपल वे ऑफ जनरेटिंग अ पाथ जो कि आपने ये करना है. जनरेटिंग अ पाथ वुड मीन कि primarily remembering this the sequence in which you have reached a particular goal. ठीक है, और a particular for example node. For example इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूज दूंगा कि if you start from A you go to B और B से फिर आप C पे जाते हैं, और एक ऑप्शन ये है कि आप वाया D भी C पे जा सकते हैं. लेकिन इस वक्त योर प्रेजेंट स्टेट इज़ एट C, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप B के थ्रू आए हैं या D के थ्रू आए हैं, क्योंकि पाथ तो उसी तरह से निकलेगा ना. तो दिस इज़ व्हाट दिस फंक्शन वुड प्राइमरीली डू. ये आप विदाउट इवन राइटिंग अ फंक्शन आप ये ऐसा कर सकते हैं. लेकिन दिस इज़ व्हाट इन सिंपल टर्म बैक ट्रैकिंग वुड मीन कि मैं सी पे हूँ, आई शुड बी एबल टू बैक ट्रैक कि मैं सी तक पहुँचा कैसे था. ठीक है, अगर मैं इस बात से पहुँचा हूँ सी तक और फिर मैंने आगे एक्सप्लोर किया इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं आगे किसी और नोड पे चला गया हूँ, तो मैं सी से आगे किस 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 पाथ के थ्रू गया हूँ, ए बी सी के पाथ के थ्रू गया हूँ या ए डी सी के पाथ के थ्रू गया हूँ. सो दिस इज़ व्हाट basically search strategies would be. So whenever you are implementing a search strategy, remember ये functions आपने ज़रूर करने हैं. ग्राफ्स के लिए आपने एक कुछ और भी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ्स को अगर आपने एवेल्यूएट करना है तो ग्राफ्स में रिमेंबर बाई डायरेक्शनल चीज़ें भी आ सकती हैं. एक नोड से आप अगले नोड पे जाएंगे और फिर वापस उसी नोड पे भी आ सकते हैं. ठीक है, उसमें लूप्स भी एग्जिस्ट फिर ऑब्वियसली करेंगे. तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो यू विल हैव actually have to check for the loops also, and for all those undesired say repetitions of evaluations that are actually required. So जो node एक दफ़ा evaluate, so key thing is कि जो node एक दफ़ा evaluate हो गया है on a particular path, उस path के ऊपर उस दोबारा node को आप evaluate नहीं करेंगे, then you will ignore that. लेकिन अगर आप उस नोड के ऊपर किसी और पाथ से आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली इसके लिए तो आप एवेल्यूएट नहीं करेंगे कि क्या वो गोल नोड है या नहीं है. वो आपको पहले से पता है कि वो गोल नोड है या नहीं है. जब आप पहले पाथ के थ्रू वहाँ तक पहुँचे थे वहाँ पे भी तो आपने एवेल्यूएट किया था ना. लेकिन जो कॉस्ट आप निकालेंगे या उसकी जो पाथ डिटर्मिन करेंगे उस पाथ के लिए आपको कुछ
ये चीज़ लाजमी देखनी पड़ेगी कि आप क्या कॉस्ट इनकर करके वहाँ तक उस बात तक या उस नोड तक एक्चुअली आप पहुँचें. So this is primarily a very basic introduction of search strategies. और जितनी भी search strategies हम आगे discuss करेंगे वो इसी basic algorithm को use करेंगे. So in my next video I'll be talking about various search strategies. जिसमें हम blind search strategies के बारे में पहले बात करेंगे और फिर informed search strategies के बाद में करेंगे. और उसमें फ़र्क क्या होगा, उसमें फ़र्क जो है वो आपका ये evaluation function जो है वो फ़र्क डालेगा. सॉरी सक्सेसर फंक्शन कि सक्सेसर फंक्शन डिफरेंटली नोड्स को जनरेट कर रहा होगा. बाकी जो फंक्शंस हैं, जो कोड है, वो आपका ऑलमोस्ट वही रहेगा. और सक्सेसर फंक्शन के लिए ऑब्वियसली आपने एक डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना है, क्यू यूज़ करनी है, स्टैक यूज़ करना है, प्रायोरिटी क्यू यूज़ करनी है. दैट इज़ द डिसीजन विच यू हैव टू मेक. और उस क्यू के अंदर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर आपने नोड्स को ऐड कैसे करना है, ये बेसिकली सक्सेसर फंक्शन का काम होगा विच लाइकली टू बी यू लाइकली बी डूइंग. सक्सेसर फंक्शन किस सीक्वेंस में नोड्स को वैल्यूएट करना है ये भी डिटरमिन करता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.